Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 3, chapter number 5, and the heading of the chapter's name is Laws of Motion, right? So, this is the physics subject, and this is Chetan sir. So, this physics belonging to NCERT class 11 physics, and basically, this is 5.3 concept force. So, we are going to see force into depth now, from now onwards, because yesterday we saw the cause, cause of the force. Okay, and the effect of force is basically momentum. Okay, and we are going through beta series. This is Physics Indian Professor channel, YouTube channel. Okay, so first of all, I'll write the heading called force. Okay, okay, so we all know that basically force is a push either or pull or else holding by hands or holding by surface. So basically you're going to observe the friction over the rolling body or sliding bodies, right? So through holding we used to use the frictional force. ठीक है, frictional force. So we are going to study the forces, the variety of forces through the laws. First of all, we are going through the Newton's laws of motion. Okay, till yesterday we saw the concept called inertia. ठीक है. So this is the property of a body. So basically what is inertia? मैंने आपको कल बता दिया है. Types of inertia भी मैंने आपको बता दिया, right? So inertia is the inability of a body. We all know that does not allow any body to accelerate by itself, either by a rest state of position or else uniform motion or else by direction. So the body will not change its acceleration by itself. That inability property is called as inertia. So this is what we learned till yesterday. Okay, so why we introduced inertia? Simply to introduce the concept called force. अगर फोर्स को आपको समझना है तो पहले आपको किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. एनी हाउ, सो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बता दिया कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज आइदर पुल और पुश. बट व्हाट इज इन स्पेसिफिक ऑर्डर सर? फोर्स का मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या है? So through the Newton's second law, when we break the state of inertia, we'll come to know, we'll come to observe the concept of force. ठीक है, तो देखेंगे फोर्स का कंसेप्ट क्या है. फाइन. सो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ वी आर गोइंग टू सी. इन जनरल तो वैसे भी कोई भी बता देगा फोर्स क्या होता है. सो वी आर गोइंग टू इलैबोरेट द फोर्स, है ना. सो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. सो द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum. देखो, the rate क्या होता है? time. The rate मतलब time of change of momentum. अगर momentum change हो रहा है तो because of time, क्योंकि ये क्या है? This is nothing but this is t2 minus t1 will get p2 minus p1. So इसका मतलब ये है the rate of change of momentum. ठीक है, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. force applied मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम लेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो विल सी द what the Newton second law definition. We have chosen the object so which is kept over the surface. हमने surface पे इस चीज को रखा है. So when we applicate the force, तो हमने force को applicate करा. Okay, so we are applying force and we are getting momentum. So this body moves in this direction. ठीक है, तो वो body क्या हो रहा है? It is moving in the direction of force. देखो, so we all know that कि black arrow mark is indicating force and the red arrow mark is indicating the momentum. So the force and the momentum both are in what?
both are in सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स को भी अप्लाई करा आपने और मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में ले रहा है. सो दिस इज व्हाट द इवेंट कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ. इसी को हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट दैट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, चलो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force applied, and it takes place. It means क्या है? It means क्या है? It means momentum. It takes place in the direction of applied force. So this is your Newton's second law. ये आपका क्या है? This is your Newton's second law. So Newton's second law, what it is reflecting? It is reflecting that the momentum of a body will be going to takes place in the direction of applied force. तो जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग द मोमेंटम. यू आर गेटिंग द मोमेंटम. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर लर्निंग न्यूटन्स सेकंड लॉ. ओके, वेरी गुड. So Newton's second law is over. Now we are going to see this Newton's second law into the, ये तो स्टेटमेंट हो गया. अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं मैथमेटिकली. ओके, सो वी आर गोइंग टू इलैबोरेट न्यूटन सेकंड लॉ मैथमेटिकली. तो क्या क्या इसको, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा आता है न्यूटन सेकंड लॉ का? फाइन. नाउ लेट m be the constant mass of a moving body. ठीक है. with a velocity, with a velocity in a straight line. ठीक है. ओके. Therefore the momentum of a body is given by, ठीक है, so that will be P is equals to mv. We all know that. ये सारा चीज हमको पता है. किसी मास को एक सरफेस पे रख दिया. ओके, सो ये मास का जो साइज है that will be not going to either increase or decrease. Size, shape, is that? Yeah. And when you apply force simply to push this body, so it will carry velocity with it. ठीक है. So the product of mass and velocity will get the momentum. So we are writing as a equation one factor. ठीक है. let dp by dt, momentum will takes place of this body as the rate of change of momentum. ठीक है. Because early when this body is at rest, so the momentum p1 is equals to 0. When this body is reaching to the final point, the momentum will be different, p2, that will be mv. Okay, why? Because the velocity is 0 in the case of rest of the position of this body mass m. Okay, so that will be p1 is equals to 0 and p2 is equals to mv.
So P2 minus P1 indicates dp. So change in time with respect to change in momentum is simply the event taking place through the mass. ठीक है? So change of momentum of the body when when a constant force acts on a body. तो मतलब क्या बोला जा रहा है? When we are talking about the dp by dt, we are saying that the acting of constant force taking place over the mass of the body is giving the momentum to the body. ठीक है? So from Newton's second law we got this. मतलब मोमेंटम क्यों आ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है. So from Newton's second law this is right. ये सही है. So I'm going to write समझो, here is the coin. So over the coin, say for example this is 1 rupee coin. Okay, this is the one face of the 1 rupee coin. Another face it will be carrying the, कहते हैं ना, emblem. ठीक है? ऐसे तीन शेयर होता है. So if you see this face also, you'll come to know that this is 1 rupee. So say for example, presently now it is in this way. So when you flip it, you'll get the 1 rupee. So you can write the same equation like this. But the first way you need to write about Newton's second law like this. आपको पहले ऐसे लिखना चाहिए. Then you go for this one. Okay. Why? Because why we should take like this? You may be having question into your brain. Sir, ऐसे क्यों लिखना चाहिए फर्स्ट? क्योंकि देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं. जब मैं आपको धकेलूंगा तभी जाके आप जाके गिरोगे. आप गिरने के बाद, यहां से आप गिर रहे हो, फिर मैं ऐसा नहीं धकेलूंगा. मीन्स यू आर टेंडिंग टू फॉल. यू आर टेंडिंग टू फॉल. और मैं पीछे से ऐसा हाथ अपने आप नहीं हो जाएगा. पहले मैं पुश करूंगा तभी जाके आप गिरोगे. फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स, देन ओनली देयर विल बी एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम. यस. सो यू नो what will happen, this is independent variable. इसको हम कहते हैं independent variable. ठीक है? And this is dependent variable. Clear? This is dependent variable. तो मोमेंटम फोर्स पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमको पहले ऐसे लिखना है. Now I'm going to flip it up as per Newton's second law. Okay. So F is equals to K. So is equals to K. We are going to simply substitute for the proportionality sign dependent on F. Yes, correct, Umesh. So dp by dt keep as it is. So is equals to K into d by dt, where we all know that P is equals to क्या है? mv है. तो P के जगह में आपको क्या करना है? You need to substitute that. आपको क्या करना है? आपको substitute करना है. So F is equals to K into, first of all, I'm going to write this step. एक बार फिर से लिख दूंगा यहाँ पे. Now we all know that the differentiation of u and v. u की जगह में m है, v की जगह में v है. ठीक है? So we are going to write like this: u dv by dt plus v into du by dt. Is that correct? तो अभी हमको इसको कैसे लिखना है? How we are going to write this step? mv. तो m यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे और यहां पे m लिखना पड़ेगा. सिंपल. So this is the formula for the differentiation, है ना? So into this place you are going to substitute this whole term. यहाँ पे आप substitute करोगे. ठीक है? For convenient, k is equals to 1. Constant आपका 1 बन जाएगा. F is equals to m into dv by dt plus v into, okay, मुझे यहाँ पे I think I need to write, यहाँ नहीं, ये correct है. I need to write m here. This is v and this is m. Okay. So we all know that
if you are differentiating any constant को आप differentiate करते हो, since I said that, see here, since I said that m is the constant, okay, so m क्या हो जाएगा, this will be equals to 0. Very good. So 0 into v is 0. ठीक है, you are going to write m into dv by dt. Okay, so f is equals to m into dv by dt, whereas a is equals to rate of change of velocity. ठीक है, आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, so we'll get f is equals to ma. This is the conclusion for newton's second newton's second law. न्यूटन्स सेकेंड लॉ हो गया. So Newton's second law is over. You can also write the Newton's second law in vector form. इसका vector form कैसे लिखोगे आप? Since mass will not be having any direction, only acceleration will be having direction, as well as force will be having direction. Because mass is a scalar quantity, whereas acceleration as well as force is a vector quantity. So this is the vector form for the F is equals to ma. So is this clear, my dear kids? Okay. Yeah. Ashwini Rathod, Aishwaryan Saundarya, Parijain. Good. Hmm? You people are getting that. Now we are going to note some points. कुछ points को हम लोग note कर लेते हैं. वो चीजें क्या हैं? One by one we are going to see that. Okay. So the value of k. The value of k यहाँ पे था ना हमें. F is equals to kma. The value of k depends on the units adopted. ठीक है. For Newton we are adopting k is equals to 1 ले लिया हमने. ठीक है. For the measurement of force. Force in SI and CGS. SI and CGS. SI in the sense इसके अंदर MKS भी आ गया. Both are one and same. Sisterly units. ठीक है. In SI and CGS, the unit of force is chosen that k is equals to 1. मतलब आपको to get the value of force into CGS. ठीक है. तो MKS में क्या आता है, SI में क्या आता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ कहते हैं ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द CGS. ठीक है. और यू कैन टेक दिस एज SI न्यूटन. ठीक है. ओके. सो वी आर having the k value that is equals to 1. इसके लिए भी और इसके लिए भी. Right? Is that clear? To get these units, we are having k is equals to 1. So this is the first point we are making out. ठीक है. हमने first point बना लिया note के लिए. The second note what we are going to take. So basically we should know that हमें पता है, सबको पता है कि force is a vector quantity. ठीक. Okay. Because acceleration is the vector quantity and we are putting up the dot product with the scalar quantity. So the resultant we are getting the vector quantity. Okay. तो इसीलिए हमने बोला कि force vector quantity है. When the
player kicks a ball, then the ball, then the ball's velocity changes. We all know that. ठीक है. Thus, we can say, thus we can say that we can say that a force can produce acceleration. ठीक है. The force can produce acceleration. Now don't go up in this equation ऐसे कि अगर force acceleration को produce कर सकता है सर, तो फिर क्या ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट है? नो माय बच्चों. एज आई सेड यू दैट द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फोर्स. तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उस पे मोमेंटम डिपेंड करता है एंड दिस मोमेंटम is a type of motion which brings acceleration into the body. Why? Because that momentum carries velocity of the body, where the velocity will get change. The velocity will get change due to what? Due to फोर्स में चेंज आने के बाद. फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है एंड व्हेन वेलोसिटी चेंजेस यू विल गेट द एक्सेलरेशन फैक्टर. तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है. तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ना कि एक्सेलरेशन फोर्स को प्रोड्यूस करता है. इज दैट क्लियर? मेनी ऑफ विल गेट इन कंफ्यूज ज्यादा एक्सेस थिंकिंग करने से. डोंट गेट इनटू एक्सेस थिंकिंग. फिजिक्स को सिर्फ फिजिक्स की तरह समझो. ओके, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿಯಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಕಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಂಗ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಣ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, so the fourth point we are going to make, when a force is used in elastic string to stretch it, to stretch it, okay, what will happen? Thus force can deform a body. Force not only changes the position of a body but also it can deform a body. Hang here. If I take a pen and I will apply a force over it, nan ಎಳ್ಯಾಕ್ try ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. If I'm going to stretch it, if I'm going to bend it, so definitely there will be deformation into the shape of this body. Because of what? Because of force. This is one of the property of the force. Okay, fine. Now F is equals to ma will be applicable only to the ordinary velocities, ordinary velocities of the bodies. Ordinary velocities in the sense, ordinary velocities in the sense only to the macro bodies. मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों. What I'm trying to say you, wait, what happened? Anything wrong? That floating things may have gone anyhow. Okay, so is this over, my dear kids? Means you cannot use
that F is equals to ma to the celestial bodies, like planet's acceleration, or else speed of light. You can use this F is equals to ma to the only ordinary velocities, or ordinary velocities in the sense, ordinary vehicles are moving, as well as buses are moving, a person is running. ऐसे ऑर्डिनरी वेलोसिटीज को आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ दैट इन चीजों को आप यूज नहीं कर सकते. मींस नॉट एवरीवेयर यू कैन नॉट यूज दैट सिंपली. ओके, फाइन. Now we can, we all know that, we all know that SI unit of force is न्यूटन. ये सबको पता है. बट हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि जैसे से फॉर एग्जांपल, if I am taking the length physical quantity and I am writing that I am going to measure that length in terms of 1 meter. So we all know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Now क्या किसी को पता है कि 1 न्यूटन कितना होता है? Do anybody knows that कि 1 न्यूटन कितना होता है? I think many of you don't know that कि 1 न्यूटन कितना होता है. Okay, so 1 मीटर मतलब अंदाजा लगा सकते हो, this is 100 सेंटीमीटर स्केल होता है सर. So by that we come to know that. Okay, fine. And one thing, my dear kids, listen up. So whenever you are writing the force is equals to 100, आगे आप क्या लिखते हो? यूनिट लिखते हो. So you cannot write like this न्यूटन. ऐसे नहीं लिख सकते आप. This is wrong way of writing. So you should write like this, Newton, or else you can simply write capital N. Either you use unit like this, or else you use the symbol of SI unit like this, capital N. This is the right way to express the SI unit. Okay, yeah, that is in terms of dynes. I'm not asking that कितना है डाइंस, कितना है बताओ मुझे, कितना है? क्या किसी ने देखा है डाइंस कितना होता है? Simply you know that कि 1 Newton is equals to 10 raised to 5 dynes, sir. Now tell me how much uh, 1 dyne is equals to. अब बताओ मुझे. Now you are going to say that sir 10 raised to minus 5 Newton, sir. यही बताओगे ना आप लोग? Okay, so symbol is capital N. Anyhow, define 1 Newton, और सिंपली क्वेश्चन क्या पूछेंगे? डिफाइन न्यूटन. ठीक है, चलो. सो वी कैन इजीली डिफाइन दैट. कंसीडर, क्या करना है आपको? ये इक्वेशन आपको लिखना है, F is equals to ma, whereas if m is equals to 1 kg, ठीक है, m is equals to 1 kg and acceleration is equals to 1 meter per second square, then F is equals to 1 kg meter per second square. ठीक है, this is equals to क्या है? 1 न्यूटन. सर स्टिल वी आर नॉट गेटिंग. सर आपने बता तो दिया इतना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, आपने बता दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो वी नीड दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट में बताइए सर. ओके, नाउ लिसन अप. न्यूटन क्या होता है बेसिकली? 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज द फोर्स. 1 न्यूटन इज द फोर्स. ठीक है, 1 न्यूटन इज द फोर्स. तो फोर्स कहां पे यूज होता है? सिंपली टू गिव अ पुश और पुल. किसी भी चीज को आपने लिया, से फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज लिया, सो आई एम पुटिंग अ पुश, आई एम पुटिंग अ फोर्स, आई एम पुलिंग विद अ फोर्स. ठीक है, तो 1 न्यूटन क्या है? ये एक फोर्स है. सो फोर्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of, in a body of mass 1 kg. Now listen up my dear kids. मैंने एक चीज को लिया, आई हैव अप्लाइड फोर्स, मैंने पुश लगाया
1 मीटर ऑफ पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस बॉडी में एक्सेलरेशन आया, बट स्टिल दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 kg. Requirement क्या है? The body should carry mass of 1 kg. Means if you're taking a demo as an example to define the definition of 1 Newton, so it should be carry mass of 1 kg. So when you are keeping this over the surface and you are applying the force, आपने push किया और इस बॉडी के अंदर 1 मास kg के साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया. मींस फॉर एवरी सेकेंड it should move with the velocity, change in velocity of 1 meter per second. First second में 1 meter, say for example I will show you here. यहाँ पे एक मास है, okay, so you are kept over the surface. आपने surface पे क्या करा? रखा, okay. Now you are applying force over this mass. So this is 1 kg. So here, from here to here, in 1 second it has moved with the speed of 1 meter per second. For next second, तो इसमें change in velocity कितना add होना चाहिए, increase in velocity कितना add होना चाहिए? 1 meter per second. मतलब this is 1 meter per second, again you are adding 1 meter per second for next second. So then it will be कितना, ये कितना हो रहा है? So this is 2 meter per second in next second. यहाँ पे ये पहले सेकंड में 1 meter per second हुआ, फिर next second में 2 meter per second हुआ. Okay, so in next second again we are adding up another, so in the third second it has increased to 3 meter per second velocity for the third second. So this increase in velocity in the order of 1 meter per second for every instant of 1 second is called as, in the mass of 1 kg, is called as, there is application of 1 newton of force. तो इसको बोला जाएगा कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इसके अंदर अप्लाई हो रहा है. So this is for pushing. Sir, what for pulling, sir? The same case. मैंने पीछे से फोर्स लगाया था, इस बार आगे खींचो. सिंपल है, यही आपका एक्सेलरेशन आना चाहिए ऑर्डर. So this is called as what? Okay. Okay, my dear kids, we are going to write some note. Okay. We all know that ki 1 kilogram weight is equals to kitna? 9.8 Newton. And 1 Newton is equals to 10 raised to 5 dynes. Sir, pertaining to units of force, ऐसे कितने यूनिट्स हैं बताइए. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि यूनिट्स ऑफ फोर्स बहुत सारे हैं. ठीक, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट ऑफ ऑल in terms of absolute units as well as इसका बाइफर्केशन थोड़ा ऑर्डरली करेंगे. ठीक है, सिस्टम वाइज एज वेल एज यूनिट वाइज. You know, force depending upon gravity, those are called gravitational units. उसको हम लोग gravitational units कहते हैं. ठीक है, and force depending upon the system made by the humans, उसको हम कहते हैं absolute units, standard units. ठीक है, so we should first of all know the system as well as absolute units. ठीक है, and gravitational units. Some 3 rows I'm going to put. तो 3 rows को मैं 3 या 4 rows को पुट करूंगा, देखेंगे कितने सिस्टम्स हमारे पास हैं. ठीक, so we have systems basically कौन से हैं? SI system, ये सबको पता है. And CGS, FPS and MKS. ठीक है, चलो. So the absolute units we know that, हमें पता है न्यूटन, we all know the absolute unit. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट
for force. One is Newton. In terms of gravitational units, ठीक है, kilogram weight, ठीक है. And in terms of CGS में क्या आएगा? 1 Newton is equals to क्या? 10⁵ dynes बोलते हैं ना, dyne, ठीक है, 1 dyne. Okay. Now with this, it should be gram weight, ठीक, gram weight. And in FPS, it should be poundal, ठीक है, ये यूनिट याद रखना आप लोग, poundal. Okay. And here, uh, in this case, LB weight. Fine. For the FPS in terms of gravitational units. Now it should be kg meter per second square. ठीक है. And this should be homework. आपका ये homework रहेगा. ठीक है. ये चीज आप बताओ कितना आता है, क्या आता है. We are going to see that. Fine. You may be having answer in the column only, or you may have to find out the new thing. हो सकता है, दोनों हो सकता है. ठीक है. चलो, this is over. Now we are going to go for the Newton's third law. Newton's third law को जाते हैं अभी हम. What is basically Newton's third law? We all know that the statement of the Newton's third law, for every action, for every action means you are applying the force. ठीक है. For every action you are applying the force from first body to second body. यही, इसी को हम action कहते हैं. For every action there is equal and opposite reaction. अभी ये रिएक्शन क्या होता है सर? रिएक्शन भी आपका फोर्स होता है. सो फोर्स क्या होता है? सेकेंड से फर्स्ट को इक्वली एक्ट करता है. मतलब जो फोर्स आपने फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी को लगाया, उसी अमाउंट में फोर्स सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी को लगाता है. ओके. तो सर इसको हम कैसे लिखते हैं? Since second body is applicating the force over the first body, तो आप इसको कैसे लिखोगे? You're going to write F12. मेरी बात कुछ समझ में आई? You're going to write F12, मतलब दो से आपने फर्स्ट को फोर्स लगाया. How you're going to write this one? पहले से आपने दूसरे को लगाया. ठीक है. तो फर्स्ट इधर लिखो, सेकंड इधर लिखो, ऐसे. Understood sir? So these two forces are equal in magnitude. वैल्यू दोनों का सेम है. देखो F ही है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. ये आपका मैग्नीट्यूड है. सिंपल है. ठीक है सर. इक्वल तो हमें समझ में आया, बट यू आर सेइंग अपोजिट. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको आप प्लस वाई एक्सेस बोलते हो, इसको माइनस वाई एक्सेस बोलते हो, प्लस एक्स एक्सेस बोलते हो, माइनस एक्स एक्सेस बोलते हो. नाउ से फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग हियर, सो इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी व्हाट? प्लस एक्स. ठीक है. क्योंकि 1 2 3 ये सारे मार्क्स को क्रॉस करते हुए जा रहे हो. एंड व्हेन यू आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, नहीं मेरे को इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है. सो यू आर मूविंग थ्रू द -2 -3 -1 -2 -3 -4 एंड -5. तो ऐसे आप जा रहे हो रिवर्स ऑर्डर में. सो यहाँ पे एरो मार्क लगा होता है, एरो मार्क. सो एरो मार्क पॉजिटिव, एरो मार्क नेगेटिव. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम 1 to 2, अगर फ्रॉम 1 to 2 F21 इज +1, F21 अगर +1 है, तो F12 क्या होना चाहिए? इट शुड बी नेगेटिव. इट शुड बी नेगेटिव. सर F12 अगर नेगेटिव है, तो क्या हम इसके सामने F21 के सामने माइनस लगाएं? Yes my dear kids, you can. See here, when you are writing minus in front of F21, it means that it is the value of what? It is the value of F12.
तो whenever you are writing, you should write like this: F12 is equals to minus F21. So this is Newton's third law. तो F21 क्या है सर? F21 is positive. Then F12 क्या है सर? It is negative. Simple है. Do you got this point, my dear kids? क्या clear हो गया सारा चीज? Any confusion over the Newton's third law? किसी को कोई confusion? Any confusion over the Newton's third law? नहीं. If not, then very fine it is. आपको समझ में आ गया ये चीज. चलो अच्छी बात है. Very nice. You peoples are getting everything easily. ठीक है. So मैंने आपको बता दिया. In book they have written like this. Okay. What they are trying to define that कि F12 कहो या F21 कहो, magnitude तो F ही रहेगा. They are trying to do this. In the book they have mentioned like this, but in the competitive books you'll get like this: F12, F21. Okay. Or else they will write like this: FAB is equals to FBA. ये भी हो सकता है. Okay. चलो. So illustrations of Newton's third law means examples. So the first example: when we press when we press a spring along the length, ठीक है, along the length with thumb. ये आपका क्या बोला जाएगा? This is called action force. So the spring turn thumb in opposite direction this is called reaction. ठीक है. तो अभी आप जब एग्जांपल लोगे like this, so if you are using the thumb, ठीक है, यहां से भी आपने थंब यूज किया और यहां से भी आपने थंब यूज किया, तो देखो these two directions are action of force FA and FA. ठीक है. Then after having crunching to some length, तो थोड़े से लेंथ के थ्रू क्रंच होने के बाद द स्प्रिंग विल गो बैक अपोजिट टू द फोर्स. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ से. और एल्स यू कैन डू वन थिंग, यू कैन फिट इट टू द वॉल. ओनली वन फिंगर यू कैन यूज इट. ठीक है. कैसे? आपने एक वॉल को स्प्रिंग को फिट किया, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग सिंगल थंब. So you are applying force of action and you are getting force of reaction. So amount of force you are applying is F, and amount of force at the reaction force you are getting the F. So the magnitude is F, but we are getting what? FA is equals to FR. So action of force के सामने माइनस आता है क्योंकि action of force क्या था? ये तो पॉजिटिव था, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन रिएक्शन फोर्स क्या है? इट इज नेगेटिव, तो इसका वैल्यू इधर ही आएगा ना. सो दैट इज दिस मच. सिंपल है. इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, वेरी नाइस. सो इवन दो while using the gun, आपको जब आपने गन यूज करना है, ठीक है, when you are hitting, when you are firing with a bullet, ठीक है, तो जब आपका बुलेट आगे जाता है आफ्टर ट्रिगर पुल करने के बाद,
ठीक है, क्या होता है, you are getting the action of force here over the bullet, and your hand with the kya gun will be going to get in the reverse direction, ulta. That is called reaction of force. So this is also Newton's third law. ये भी आपका Newton's third law है. Okay, fine. So this is over, and you will be having so many examples. ठीक है, बहुत सारे examples है, आप books देखो उसमें मिलेंगे, and मैंने आपको बस 2 examples का explanation दिया, and next concept we are going to see is impulsive force. The last concept I'm going to discuss for today's lecture. ठीक है, फिर कल देखते हैं. So impulsive force होता क्या है? Basically it is the force. ये तो पता है सर, टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है, फोर्स टाइप है. So if the force that acts on a body for short interval of time, for short interval of time, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? If the force that acts on a body for short interval of time is called as impulsive force. Sir, example, when father slaps son, the impact will be greater, the impact of the force will be greater. Okay, sir, why only for son, sir? When mother slaps daughter, sir, now this is okay. Hmm? Simply for this is for gag. Okay, this is for gag, mazak. Don't take anything seriously. So basically, sir, apart from these 2 examples, इन 2 examples के बाद और बताइए, when you are using shuttlecock, है ना, बैडमिंटन जिसे आप कहते हो, in badminton you all know that the ball and bat come in contact for small instant of time, for short interval of time, ठीक है. So that is called as application of impulsive force. Even though in cricket the bowler is throwing a ball over the bat, when we fall from water by accidentally, yes, we can say that, but we'll get in touch, no, हम टच सरफेस के साथ टच में रहेंगे ना. So like this it should be like quickly slap, ऐसे मार के हट जाता है हाथ. So the force will be going to act for short period of time, है ना, short interval of time. So that is called as impulsive force. So the today's explanation is up to this only, my dear kids. So impulsive force के बारे में फिर कल थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. I taught you impulsive force, और impulsive force का मीनिंग आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया? Yeah, if the force that acts on a body for short interval of time, that is called as impulsive force. ठीक है, चलो. So thanks for sitting patiently. Okay, bye bye, my dear kids. So we'll see tomorrow's lecture at the same time. So today we are going to close this class. Yeah, definitely, Parijan, all the videos will be get uploaded on the Sundays. अभी तो presently laws of motion के upload करूंगा, जो पीछे के बचे हुए हैं ग्रेविटेशन के वो संडे में करूंगा, and I'm going to make the playlist of that, right? So playlist से आपको help होगा. Okay, so you can go through the playlist. Fine. So Samir Kulkarni and Vaishnavi Mat, please take the attendance.
Bye bye. See you tomorrow at the same time. Jai Hind.